If India in 20, 30 years time is going to be 10-15% of world GDP, it is going to be a center of gravity. When Mao was asked that you had almost reached Assam, so why didn't you sort of take your troops all the way to Calcutta? He said, don't I have enough problems in China? And see, geopolitics, you'll realize, होता है ना वो पड़ोसी आप बदल नहीं सकते और पड़ोसी को मैनेज करना होता है तो झगड़ा भी होगा लेकिन आपको सुलह भी करनी है नहीं तो आप झगड़ते ही रह जाओगे Maybe UN in its current form, unless proper reform happens, is not relevant. And therefore G20 is the right forum. But when you go through that process and you realize that no one is standing up for you because China is 5 times your size. जो भी हो रहा हो politically, but economically they were joint at the hip. A lot of US debt is funded by Chinese. Most of the American companies find a huge market in China. Neelkanth, welcome back for episode 2. I think in last episode we deconstructed India's path to being a $20 trillion economy in whatever 15-20 years. But see that as country grows, I think last time you mentioned that at that scale will probably be 10-12% of global GDP, which means India is starting to become very significant on a global stage. Abhi recently India के पास G20 leadership थी. Lot of media coverage around that and all that, right? Is probably recognition of India's rising stature. So India is no longer, a small isolated country, only concerned with its own business. We are getting increasingly interlinked with the larger global geopolitical situation, and whatever happens in the world also going to affect India. अभी अगर रशिया यूक्रेन सिचुएशन चल रही है तो ऐसा नहीं कि इंडिया उससे इम्यून है या चाइना में जो भी हो रहा है it is affecting India economy directly, probably beneficially or harmfully. You will help us uncover. So let's review like what are some of those bigger topics in the world that India needs to increasingly pay more attention to, and how does it affect? So one of the first thing I want to start with is see when we were small हम वो सुनते थे कोल्ड वॉर चल रही है. वो कब से चल रही है? इंडिया was supposed to be aligned with Russia. स्कूल में बचपन में रशिया के प्रोपेगेंडा वाले लोग आते थे, बुक्स बांटते थे. मतलब आई रिमेंबर आई डोंट नो तुम्हारे स्कूल में हुआ था नहीं पता. I grew up in a town which was built with Russian collaboration. Correct. I can read and write Russian. Incredible. Wow, that's yeah. So that's obviously so Cold War was deeply penetrated in I can talk in Russian as well. Wow, incredible, right? तो वो उस वक्त का ज़माना था. अभी things have changed last 20-30 years. We've seen rise of China, and there seems to be a lot of tension between US and China. In fact, I remember you recommended me this book a while back, Destined for War. Thucydides Trap, right? Basically, which says कि अगर आप एक सुपर पावर है और दूसरा राइजिंग है तो उनका क्लैश तो इनएविटेबल है. एंड आई थिंक बुक में ही आउटलाइंस 15 सच इंस्टेंसेस और उसमें 11 में वॉर हुआ, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर 1 बिटवीन बेसिकली इंग्लैंड एंड जर्मनी इन द मेन पार्टिसिपेंट इन दैट. तो अभी what is happening? Like, how do you understand, the US and China situation, and why there seems to be so much rise in tension, especially last 3-4 years? They were very deep trade partners. US, I think, played a very big role in emergence of China. A lot of technology and capital came from US, but now there seems to be just this simmering tension with a lot of uncertainty in future. So it is a very, very complex topic. See what happens in history, or what has happened in history, and this is of course very well documented in Europe, for example, that every 80 to 100 years there is kind of a regime change. See what happens, and whether you call it, there's a whole new theory, actually you would say a 30-year-old theory, which says that every 4th generation there is a turning point. Because there is a certain gradation at which, so for example, one generation works hard, then the country becomes rich, then the people who are born around that time still retain some of the old values, the country keeps getting better. By the time you get into the 3rd generation, the people have forgotten why they worked hard and how they worked hard and got rich, and then there is a rot starts to set in, and then there is a turning point where there's a revolution, right? So people have observed that every 80 years, 100 years, there is a revolution.
in Europe, starting from, I would say, the 1520s, 1530s, there used to be this every 80, 100 years, the Treaty of Vienna, the problem is that one power will rise, one power will decline, and if the existing powers don't give space to the rising power, then the rising power has to fight for it. And and mostly, and which is the scary part of this, that once you have a big agreement, right, the League of Nations, or say the Bretton Woods Conference after 1945, then there is a relative peace for 80 or 100 years. Now we're completing 80 years after 45. Yeah. And so in this period, so clearly China has emerged from being, 3-4% of global GDP to being now maybe 15% of global GDP. And therefore, it now seeks to assert its position, and it feels that some of the existing global sort of rules for engagement are biased against it, and it wants to change it. It does not know how to change it, or it's trying to figure out how to change it and it's a learning curve for everyone. It's like, both of us have 2 kids each, when say the boys are crossing, becoming 13 and 14, they may still be fighting. Suddenly they become large and muscular, and when they wave their hand, they can hurt their sisters, right? So it's somewhat similar, right? So you grow bigger, you don't even know how to manage your strength, and there is a learning curve, and they've never handled it. So they come across as being very boorish. They've picked up fights with everyone, and so in many ways, and they realize that the Americans will not let them grow. In fact, if you and this is how things change in diplomacy and geopolitics. One of the more permanent principles is balance of power. तो क्या होता है कि जब 1980s China and US were allies. CIA और Chinese operatives वो चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर पे बैठ के वो USSR सोवियत मिसाइल साइट्स को ट्रैक करते थे, राइट? Despite China being communist country even then. हाँ. So निक्सन का वो जो 71 में जो हुआ था, in fact that was classic balance of power, right? That when I think the 69 or 69 Soviet Union और China में झगड़ा हुआ था, and then China felt threatened, and that was the point at which Kissinger made that famous trip, and then the US and China aligned. So US ने उनको काफ़ी Black Hawk helicopters, missiles वगैरह 80s में दिए थे. फिर late 80s there was a problem. First, the Soviet Union collapsed. German unification happened. The Tiananmen Square protests happened. And the first Gulf War happened. और तब चीन को समझ में आ गया कि जो भी होगा, सोवियत यूनियन तो गया, तो अब प्रिंसिपल एनिमी नंबर 1 अमेरिका के हम ही होने वाले हैं. एंड तभी से मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिस्ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली कि वो कम्युनिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, वो तियाननमेन स्क्वायर के बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था. तो चाइना का वो डिस्ट्रस्ट जो है, इनफैक्ट in hindsight it seems that when China ascended the WTO, World Trade Organization, in 2001, कि उन्होंने बढ़िया डिसीजन लिया और एकदम सक्सेसफुल हुआ. If you read the debates that were happening within China at that time, they thought it was an American conspiracy to destroy the primacy of the Chinese Communist Party. उनको लग रहा था कि ऐसे आप ट्रेड खोलोगे, सोसाइटी भी खुल जाएगी, फिर लोग डेमोक्रेसी मांगेंगे, फिर हमारा क्या होगा. तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के कहीं झगड़ा हो रहा था. सो आई थिंक द चाइनीज ऑल्सो आर स्ट्रगलिंग टू अडेप्ट टू द न्यू फाउंड पावर दे हैव. दे डोंट नो हाउ टू wield it. And this is therefore a very tricky and dangerous situation for the world. 20-30 साल में they have navigated it well. I mean, जो भी हो रहा हो politically, but economically they were joint at the hip. A lot of US debt is funded by Chinese. Most of the American companies find a huge market in China. A lot of investment has come from US. A lot of technology transfer, both overtly and covertly, happened to China, and then China has benefited enormously
बट पिछले 4-5 साल से आई गेस probably start of pandemic onwards and Taiwan seems to be an emerging flashpoint. ताइवान से ज़्यादा ना क्या हुआ है कि आई थिंक जब चाइनीज़ सब सी अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट तो हमेशा से रहे, राइट, एंड दैट्स आई थिंक व्हाट चाइना आल्सो थिंक्स कि अमेरिकन को पैसा दिखा दो तो वो सब पॉलिसी प्रिंसिपल भूल जाते हैं, राइट. दैट इज़ देयर व्यू ऑफ, आई थिंक चाइनीज़ pretty much think anyone who's non-Chinese is a barbarian, right? So I think they may not explicitly state it, but that's the worldview. तो उसी बिलीफ में वो ट्रीट करते हैं अमेरिकन को. Since you mentioned, maybe I'll interrupt you. One of the books I was reading कि for thousands of years China में at least culturally बड़े accepted कि China is closest to heaven, so they are a portal to heaven. And Chinese people closest, तो बाकी सबको उनके थ्रू जाना है. सब लोग ट्रिब्यूट देंगे, सब लोग अपना गिफ्ट भेजेंगे. सो दैट इज द एंड वहाँ का भी मतलब पॉलिटिकल एलिट जो है वही सब किताब पढ़ के उसी इल्यूजन्स में बड़ा हुआ है. सो आई थिंक इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बट इट इज अंडरस्टैंडेबल कि ऐसे वो obvious self-evident truth. I know. So but anyway, the gist is that I think the expectation many people in the US had was exactly what they were fearing in 2001. The Chinese elite were fearing in 2001 कि अगर इकॉनमी खुल जाएगी तो सोसाइटी भी खुल जाएगी. और बट हुआ क्या कि 2013-14 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पलट गई. So till then they were ceding space to the private sector. They were opening up and there was a very clear message. Suddenly SOEs, the state-owned enterprises, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं चाइना के, उनका मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हुआ उसमें. एंड जब वो अलीबाबा वाला हैंड फाइनेंशियल वाला फेमस इंसिडेंट हुआ, जब उन्होंने जैक मा ने जाके ओपनली चैलेंज कर दिया रेगुलेटर्स को, तो बहुत ज़ोर से फिर डरी कम्युनिस्ट पार्टी कि भाई अब ये लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अब खुलेआम हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. तो अमेरिका को अब समझ में आया कि ये जो हमारी उम्मीद थी कि भाई ये इकॉनमी खुलेगी तो सोसाइटी भी खुल जाएगी, वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो जाएगी, वो ना होने वाला. अब क्या समस्या है कि आपका मतलब इकॉनमी तो बड़ी हो गई और परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप डिफेंस पे स्पेंड करोगे. अब सडनली आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इनफैक्ट एक और किताब है द लॉन्ग गेम रश दोशी की, उसमें वो भी थोड़ा एक वन साइडेड ही स्टोरी है, बट वो ही राइट्स कि हाउ दे स्मगल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, ओल्ड रशियन और सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर थ्रू पोलैंड एंड यूक्रेन एंड देन दे डिड नॉट डेवलप इट. उसका खाली वो फाइनली पेंट करके रख दिया कि जंग न लगे. उसको एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना 2009 के बाद शुरू किया. सो दे वर काइंड ऑफ बाइडिंग देयर टाइम. दैट्स व्हाट ही थिंक्स नाउ. अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि शी जिनपिंग ने जब चाइनीज़ नेशनलिज्म, सो देयर आर मेनी डीप रूटेड चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन चाइना. सी, कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ टू गिव अ रीज़न टू द चाइनीज़ पीपल कि भाई वो पावर में क्यों हैं. तो जब तक माओ थे और जब चाइना की सोसाइटी गरीब थी, तो ये था कि भाई कंटिन्यूस रेवोल्यूशन, हम लोग एक राष्ट्र बनाएंगे, सब लोगों को communist country, everyone owns it and all that. Now that they are a rich country or a moderately rich country, अब क्यों चाहिए कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी पावर में रहे. तो अब उनको और रिलीजन को जा नहीं सकते. See, there are only couple of ways to consolidate power or create justification for one person to stay in power or one party to stay in power. So nationalism comes to the fore. You would think कि ये क्या पागलपन है कि आपने एक साथ जाके सभी नेबर से झगड़ा पाल लिया. राइट, आपने फिलीपींस को खरीद दिया, जापान से झगड़ा कर रहे हैं, हम इंडिया से झगड़ा कर रहे हैं, वियतनाम से झगड़ा कर रहे हैं, कोरिया से झगड़ा कर रहे हैं. भाई दिमाग ख़राब है आपका. लेकिन दिमाग ख़राब नहीं है. सी, इतना दिमाग किसी से भी ख़राब नहीं होता है. बेसिकली आपको अगर अपनी पार्टी का अस्तित्व कि भाई हम क्यों रहें यहाँ पे, तो नेशनलिज्म करना है. अब वो करने के लिए इन्होंने कह दिया कि 2049 में 2049 चाइना विल बी द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड. सुप्रीम पावर का मतलब क्या हुआ? हाँ भाई, तो वो बोल तो दिया. अब उसका मतलब ये हुआ कि भाई अब अमेरिका से बड़े होंगे. अमेरिका ने एटलीस्ट ऐसे इंटरप्रेट किया. अब अमेरिका के अंदर भी जिन लोगों को भी इल्यूजन भी था कि भाई ये
शायद कभी पलट जाएँ क्योंकि इकॉनमी खुली है, मिडिल क्लास होगा तो डेमोक्रेसी होगी, और ये वो इल्यूजन सब नष्ट हो गए, क्योंकि एक तो आपके वो वापस SOEs के बाद भागने लगे, और दूसरा खुलेआम बोल दिया कि भाई 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2049 हम लोग दुनिया के सुप्रीम पावर होंगे। सुप्रीम पावर तो अभी जो सुप्रीम पावर है वो तो कहेगा ना कि भाई अभी तो हम ही हैं, अब हमारी कुर्सी पे बैठना चाहते हो तो थोड़ा हमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब लोग बोलते हैं कि US कांग्रेस में, जो US का जो लेजिस्लेचर है, कि उसमें इसी बात पे झगड़ा होता है कि मतलब टॉयलेट कहाँ बनेगा उस पर भी मतलब समझौता नहीं हो पाता है, लेकिन चाइना को कंट्रोल करना है, इस पर बाई पार्टीसन है। तो ये झगड़ा तो उन्होंने मोल ले लिया। अब इसका नतीजा ये है कि अब ये लोग वैसे आर्म फ्लेक्सिंग करेंगे कि भाई कौन ज़्यादा ताकतवर। चीन को लगता है कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, बिकॉज उनकी सोसाइटी वीकन हो रही है, उनके सोसाइटी में सॉफ्टनेस आ रही है, उनका डेट अनसस्टेनेबल है, वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। जैसे अभी जो यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो अभी ये जो गाज़ा में हो रहा है, सो अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब उनका फिस्कल प्रॉब्लम इतना सीवियर है, वो 3 फ्रंट वॉर खेल सकते हैं कि नहीं। दैट इज़ अनदर थिंग दैट हैज़ हैपेंड, सी बाय मिसयूजिंग इट्स पावर in 2001-2, then in Afghanistan, second Gulf War, and then Afghanistan. The US public has now lost the willingness or the desire to fund wars in remote lands. Yeah. So क्या होता है कि जब ग्लोबल पुलिसमैन रिट्रीट करता है तो हर जगह गुंडे जो हैं वो बोलते हैं कि भाई हम भी अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो अभी तो यूक्रेन में एक बैटल फ्रंट खुला हुआ है, एक यहाँ पे भी है, वहाँ पे तो अभी जैसे मैं अखबार में ही पढ़ रहा हूँ कि वो सऊदी अरेबिया ने अगर ईरान को कंट्रोल नहीं किया होता तो हो सकता है कि ईरान वो इजराइल गाज़ा वॉर वाला जो है उसमें और थोड़ा आग लगाता, फ्यूल टू द फायर, एंड देन सडनली नाउ अमेरिका इज़ डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज इजराइल के सब आर्मरी जो है वो तो पूरा अमेरिका से आ रही है, यूक्रेन के भी आर्म्स जो है अमेरिका से आ रहे हैं। तो अब अगर थर्ड फ्रंट अगर ताइवान में खुल जाता है तो फिर वो कैसे अमेरिका सपोर्ट करेगा। इसलिए अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि सेकंड फ्रंट ना खोलो, बट वी आर ऑलरेडी इन द मिडस्ट ऑफ दिस इज़ हाउ इट फील्स। सी लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई 10 साल में ऐसा, व्हेन यू रीड कि हर 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में क्या हो रहा था, दिस इज एक्जैक्टली हाउ इट प्लेज आउट। तो लड़ाई शुरू हो चुकी है। And speaking of this playing out over the coming decade, there is Taiwan is very precariously balanced. It has somehow managed to, our world has allowed it to maneuver in such a situation where this company TSMC, and I know in your earlier avatar you covered them very closely. Yes. Taiwan Semiconductor manufacturing company, right? Apparently, let's say abhi AI is very hot. सारा AI NVIDIA के GPU पे चलता है. Those GPUs can only be manufactured by TSMC. No one has anywhere close to that technology. I think the latest GPU, I think H100 शायद 4 नैनोमीटर पे, और कोई दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता, लाइक नोवेयर क्लोज टू। वो सब अभी वो 7 नैनोमीटर या 9 नैनोमीटर वाले टेक्नोलॉजी पे अटके हुए हैं, विच इज़ 1 or 2 जनरेशन बिहाइंड। तो pretty much entire global supply of very high precision, most advanced semiconductor is coming from TSMC. Now Taiwan, China is asserting itself more and more, and obviously it's at least postures for integration. There are speculation that at some point, China may use force also to trigger integration. और वो होता है तो इस प्रोसेस में शायद TSMC हो जाएगी, like वो तो one way or other somebody will destroy instead of letting it fall in Chinese hands. So in some ways, how important both the role of TSMC and Taiwan in general in this, rising tension. Taiwan is a flashpoint. See, remember that even the US does not publicly go against the one China policy. See, China believes that Taiwan is part of China, right? And it is just that it is a different political system. And तो US ने भी ये बोला नहीं है, but US says कि peaceful resolution, आप मतलब झगड़ा झंझट करके मतलब अटैक करके आप उसको मर्ज नहीं कर सकते। But US ने ये भी बोला नहीं कि अगर चाइना अटैक करता है तो US will come to a defense. हाँ, तो ये बोला है, वही बोल रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि भाई वन चाइना पॉलिसी है, इवेंचुअली इंटीग्रेशन होगा,
या हो सकता है, मतलब कब होगा वो किसी की बात नहीं है, लेकिन आप बाई फोर्स नहीं कर सकते. बट ये कितना फिलोसफी ड्रिवन है वर्सेस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन ड्रिवन? नहीं. सी ये so if you go back to when the China-US relationship started getting rebuilt. See, China-US relationship has gone through ups and downs. But then China was joined the communist bloc, and therefore then it became an enemy again. And then 71, it broke away from the Soviet Union and then became friends with the US. At that time itself, this issue came up, right? Should Taiwan, but at that time, Taiwan was assembler of shoes. Right? It was not doing anything. Semiconductor तो वहाँ 87 के बाद मॉरिस चैंग ने शुरू किया TSMC. So उस समय से ही America has agreed to one China policy, but at the same time that आप force नहीं यूज कर सकते. Right? So see, geopolitics you'll realize होता है ना, वो पड़ोसी आप बदल नहीं सकते और पड़ोसी को मैनेज करना होता है, तो झगड़ा भी होगा और लेकिन आपको सुलह भी करनी है, नहीं तो आप झगड़ते ही रह जाओगे. तो ये वही का कहीं का एक बैक का लाइन है. बट यू आर राइट दैट आई थिंक द क्रिटिकलिटी ऑफ ताइवान हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली because of TSMC being there. Because so it is not just about AI chips. It is about where AI can be used. It is about the fact that modern warfare can actually be conducted through cybercrime or whatever, right? So-called cyber issues. So it is important to control that technology. But and which is why you will see that TSMC now is investing in Japan, it's investing in the US, it's investing in Europe. So basically they're trying to create that geographical diversification so that at least TSMC's technology is available a lot more. So even if it was to go, but I think it is much deeper than that. So it is not just about semiconductors. See, remember that there are military bases that Americans have in South Korea, in Japan, in Philippines. So वो dotted है. आप अगर ताइवान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो तो लोग सवाल पूछेंगे कि भाई तो अमेरिका से अलाई करके क्या फ़ायदा है, क्योंकि अमेरिका को जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आगे मदद नहीं करते. सो इट इज़ मोर अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ वेदर दे आर एबल टू सपोर्ट और नॉट. एंड सो ताइवान इज क्रिटिकल. बट आई थिंक अभी तो जो शी जिनपिंग गए थे सैन फ्रांसिस्को, उन्होंने सीधा बोला कि भाई लोग बोल रहे हैं कि 2027 में अटैक करेंगे, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है. राइट. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन. इट इज़, और कभी कभार क्या होता है कि वो दोनों साइड्स के लिए इतना क्रिटिकल इशू हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिशियन को अगर अटेंशन चाहिए तो वो उसी इशू पे जाकर कुरेद आएगा. वो नैन्सी पेलोसी जो थी मेजॉरिटी लीडर, तो वो पहुंच गई और केवल पहुंच गई. दैट इट सेल्फ वॉज अ फिंगर इन द आई फॉर चाइना. दे गॉट रियली अपसेट. तो सो इट इट विल रिमेन इन द हेडलाइंस. बट आई पर्सनली डोंट थिंक दैट मतलब अगले 1-2 साल में लड़ाई होने वाली. डिप्लोमेसी में लोग ये फ्रेज यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी. यस. And no, matlab, you can play it any which way you want. Exactly. And obviously politicians need to be opportunistic also. They need to cater to their vote bank and so on. But in this context of, this, actually maybe one more point about is, so while this tension is growing between US and China, but huge amount of US debt is owned by China. How does that play in the overall geopolitics? Well, I think it is more I don't think it was deliberate. Well, it was deliberate in the sense that it was not that the Chinese wanted to sort of get closer to America, and which is why they bought their government debt. I think the basic simple reason was that China was running a massive surplus, trade surplus. In 2007, their current account surplus was 10% of GDP. Incredibly high, right? Matlab, and so the problem when something like this happens in a normal monetary system is that फिर आपके पास मतलब इतने ज़्यादा डॉलर्स हो गए कि आपकी करेंसी जो है अप्रिशिएट करने लगेगी, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस गिरना लगेगा और तब फिर वो ट्रेड बैलेंस जो है वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा. बट चाइना डिडंट वांट दैट टू हैपन, सो दे देन स्टार्टेड बाइंग US treasuries. So basically, to protect their currency from appreciation, they started buying the US treasuries because that was the safest thing to own. So that is the legacy of this. In the last
10 years, that number has not grown. Okay. In fact, in the last 1 or 2 years, it actually started to fall very sharply. So that is a very different macroeconomic phenomenon. I think the fact that it's not that China can today threaten the US and say, देखो हम तुम्हारा $300 billion के dump कर देंगे. तो बॉस वो 300 billion dump करेंगे तो problem China को भी हो. So it is one of those things that, and remember that, and it's a very important lesson to keep in mind, that when we think about war or conflict between various countries, in our minds we think these are absolute contests. They are not. Right. See, remember that US और China तो चलो बहुत दूर दूर हैं, right? There is Pacific Ocean between them. Japan और China तो मतलब short flight away है, right? उनके बीच में कितना झगड़ा हुआ है? And there is real reason for the two countries to be sort of contesting each other, right? But think about from 1971 to now, despite all the problems, कि वो Yasukuni Shrine जहाँ पे वो the Japanese war dead from the Second World War are interred, वहाँ पे कोई भी वो Japanese leader जाके माथा टेक देता है तो चाइना गुस्सा आ जाता है, and for good reasons, right? Because there were so many war crimes the Japanese did in China. तो वो झगड़ा होता है, बीच में चाइना एक आध मिसाइल समंदर में फेंक देता है, कभी हवाई जहाज फेंक देगा जो घुमा देगा. In the midst of all this, Chinese and Japanese trade has gone from $1 billion in 1971 to $400 billion today. Right? There are, as we discussed, 20,000 people every day that fly between Japan and China. This is pre-COVID. I'm sure वो भी pick up करेगा. Japan में, because वहाँ पे demographic pressures हैं, a lot of the low-end jobs are actually being taken up by the Chinese. So ये जो rhetoric है ना, geopolitical rhetoric. So similarly, Chinese exports to the US have dropped, but the value added of Chinese export to the US is not dropping. Because वो बस 40 किलोमीटर क्रॉस करके वियतनाम में जा रहा है, वहाँ पे रिबैज होके काफ़ी हद तक some longer term changes. But I think the relationships between the two countries in many ways are defined by what the elites think. See, the common man is still interested in earning his bread and butter and developing his family. It is the elites who are then fighting, because the Americans have no battle with the normal common Chinese. They have a problem with one party being in power all the time, right? And similarly, I think Chinese may have whatever opinions of the Americans, but they just want their people to prosper. Right. And this, as this dynamic is developing, it's definitely there's very sharp rhetoric and also policy changes. US has taken a lot of recent policy changes in telecommunications, semiconductor, etc., which is going to hurt China, and China is also retaliating. But in this context now, how is India thinking about this? Like historically, India has a very complicated relationship with US because of our closeness to Russia. We talked about all the propaganda and books in school, and knowing Russian, went that deep. And today, it seems like, for a variety of reasons, US and India starting to come closer and closer. There is a lot of demand for even deeper collaboration. We have a pretty tense border with China, while trade is, I think, rising. So in this whole, developing US-China dynamic, does US see India as a counter-balancing factor or not? See, all of these relationships are very complex relationships. I think we have to keep in mind that bringing just one dimension to it. In fact, once when I met the US ambassador, I had asked about some trade friction that had emerged and all that. So he said, do you know which country we have the largest number of trade disputes with? No, it's Canada. Right. So the fact is, all of these relationships are very complicated. And so there will be many dimensions to it. But now let's think about it from India's perspective. See, geopolitical shifts and changes and have an impact over 10, 15, 20 years. So as we were discussing earlier, if India in 20, 30 years' time is going to be 10, 15% of world GDP, it is going to be a center of gravity, like it always was, like till 300, 400 years back. It was one of the economic centers of gravity in the world. And it needs to chart its own path. We cannot be seen to be
in the camp of one or the other. So, and remember that for America, whatever happens, the Atlantic and the Pacific Oceans are massive protection, right? Yeah. That their own territories rarely get attacked. Yeah. India shares one of the longest borders of any two countries, right? And so we cannot, I think, wish away being China's neighbor. I think it's also important that that we get Chinese technology. We also get Chinese capital. At the same time, we have to make sure that China's efforts to disparage India, right? So we discussed G20, right? And the whole of the purpose, I think, of during the G20 of the Chinese was to make sure that it is not a success for India. And the Western powers, because they want India to be successful, they actually made several compromises to make sure that India was successful, that G20 in India was successful. So, so it is important for us to not bow down, but at the same time, they are our neighbors. I mean, we can't. But is this whole dynamic driving closeness in US and India for perhaps economic reason, cultural reason, two largest democracy in the world, Yes. huge Indian diaspora in US doing extremely well, and so on. So is this like organically evolving in the direction where India and US are getting closer and closer? Absolutely. So there are all the reasons that you mentioned. I think these are all reasons why India and the US should be getting together. अब इतने सारे वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनेंगे, इतने इंडियंस यूएस में हैं और दे आर वेरी वेल अडेप्टेड, दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी पावरफुल ओपिनियन एंड देन इन्फ्लुएंस ओपिनियंस. व्हाइट हाउस में दिवाली मन रही है. सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर वेरी important. So therefore, US and India being kind of natural allies is good. At the same time, I don't think India can afford to be seen as totally dependent on the US. And remember that just like anywhere else in the world, these relationships have ups and downs. So I'll give you an example of Japan. 1945, when Japan lost Hiroshima and Nagasaki. Then the Americans sent an occupying force. They were trying to dismantle the Zaibatsu, whatever the industrial conglomerates in Japan, because they were seen to have supported the war effort and maybe even have triggered it. So after the Second World War, for 3-4 years, the Americans were trying to dismantle the industrial conglomerates because they were seen to have supported the war effort and also may have triggered it. And they said that, look, we have to make Japan weaker, or at least, not have those consolidated forces. Then the Korean War broke out. Suddenly, the Americans turned again, right? So they realized that now that in 1949 China became communist, the Civil War ended, they realized that they needed a capitalist, democratic setup in that region. And for the next 20 years, they transferred a lot of technology to Japan and supported the development of the same industrial groups that they were trying to dismantle in between 1945 and 50. So in many ways, I think India, so when this ISET, the comprehensive technology agreement that India and US have signed, and there is a lot of critical technology which America is now willing to transfer to India, because see, America by itself cannot control China, because China has now become too big. If it's 27 trillion, China has 20 trillion. Yeah. And though China is slowing down in nominal terms, it can still keep outpacing the US. So that the time at which in nominal terms Chinese economy outpaces the US is getting pushed out. So some people said 28, 29. Now they're saying 35, 36. Maybe it'll never happen, right? Who knows? But the point is that they cannot control it. So they need, again, the balance of power approach. With the enemy of my enemy is a friend. So there is that perspective here as well. Now, from India's perspective, we have to understand why we have become suddenly such close friends. Because America also, if you remember the 71, the Bangladesh war episode, and the kind of insults that the American president and the Secretary of State threw at Indian leaders,
No, it's just 50 years, right? So I think India has to play that well. The leadership in any country, or at least some of these countries, is thinking of it like a geopolitical game. So you cannot just say that I will trust you blindly. Or think about what happened in Japan. So Japan grew and grew and grew, and then the Plaza Accord happened. And then Japan was forced to make its currency appreciate. And that then after 87, 88, the Japanese economy has actually 90 onwards, and it has just gone down. So you cannot assume that someone will be your friend forever or enemy forever. And as a place which has 18% of the world population, we need to have an independent opinion, and we need to think and safeguard our own interests. So we need to be seen as a trusted partner. We need to be seen as a principal partner. But at the same time, we don't need to make compromises, which then jeopardize. But I mean, for the time, it seems like there is definitely a lot of tension between India and China, right? There's a lot of investment. Like in last decade, there was time where Chinese companies were actively investing. Alibaba, Tencent are all very active in the ecosystem I am part of. It was a very legitimate option to think कि उनसे पैसे raise करते हैं. But that has completely dried up. And last 2-3 years, all these Chinese groups have been, they've been selling off all their equity everywhere. So when you talked about a travel statistic between Japan and China, but I think India China is almost dried out हो गया. थोड़ा मुश्किल हो गया है. China visa नहीं मिल रहे. So Chinese are not getting Indian visas. So it's very hard to get. So let's put it in context, right? So what is it that China is seeing as India as, right? So China, even after the 62 war, saw India as an irritant. So when Mao was asked that you had almost reached Assam, so why didn't you sort of take your troops all the way to Calcutta? He said, don't I have enough problems in China? So basically, the whole purpose was to show India its place. See, in geopolitics, it's one of the, if you go back to 1840s, 50s, so there was a war between US and Mexico at that time, which most people thought was unnecessary. But the leadership at that time fought that war from America because it showed Mexico its place. And after that, the whole of North America is pretty much an American dominion. I think poor Texas and California mostly, I think after that war only became part of exactly. US. But what more than the territory changes, it was more that was औकात में रहो, right? And I think to a large extent, China wants to do that. That they are the dominant force in Asia. Now you would wonder कि भाई ये इसमें क्या क्यों इतना इसमें सर दर्द कर रहे हो यार, मतलब तुम भी जियो हम भी जीते हैं. Correct. But जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि भाई कौन किसकी बात सुनेगा. कि जैसे अगर वियतनाम को इंडिया की बात सुननी है, अगर चाइना ने इंडिया को ह्यूमिलेट कर दिया है, तो वियतनाम वाले भी सोचेंगे देखो यार तो अगर इंडिया को ह्यूमिलेट कर सकते हैं तो मुझे भी कर सकते हैं, तो इंडिया से मत सटो. Right? So so I mean it's very clear to, I think the Indian regime also is not very capable. And the deep state in India is now understood. Because and part of the reason we are prioritizing economic growth as well is exactly this. I think 2020, when these incursions happened in Ladakh, that is when the Indian deep state woke up. That boss, ये लोग तो एकदम ही untrustworthy हैं. And the only way you can fight them is by growing your economy. See, the political leadership has been, कि भाई business को रोक रहा हो, state का footprint कम करो. But the permanent bureaucracy, the diplomats, I think there was still a bit of a dithering. Because is China, can it be an ally or not? Or should we swing very far towards economically, domestically, towards the private sector? But when you go through that process and you realize that no one is standing up for you. मतलब उन्होंने हमारी धरती पे अपने ट्रूप्स भेज दिए और कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हो रहा है. Because China is 5 times your size. हर किसी का ट्रेड रिलेशनशिप है. They are the biggest trading partner. तो कोई क्यों पंगे लेगा उनसे आपके लिए? तो इसका उसको सुलझाएं कैसे? तो उसका एक ही तरीका है कि आप इकोनॉमी को ग्रो कराएं. तो बट इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए नाउ
how is India navigating, or how should India navigate trade relationship with China's? Right now, are they kind of stagnant? Are they still growing behind the scenes? No. I think they should grow. The should grow is one part. Are they growing? Or is it like... I think so. Have to, no? See, remember that trade is not driven by political cycles, right? And अब जैसे इंडिया में अभी स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स FY22 में 45,000 करोड़ थे, FY23 में 89 हो गए, 90 मान लो आप, डबल हो गए. इस साल हो सकता है 2 लाख करोड़ हो जाए. अब पूरा इकोसिस्टम चाइना में बैठा है, तो आपको चिपसेट्स लाने होंगे, कैमरा मॉड्यूल्स लाने होंगे, बैटरी पैक्स लाने होंगे, चार्जर्स, व्हाटएवर, यू नो, तो सो एवरीथिंग दैट डिस्प्ले मॉड्यूल्स लाने होंगे, वो सब चाइना से ही आएंगे. तो ट्रेड तो बढ़ेगा ही ना. सो इफेक्टिवली आप लास्ट माइल असेंबली करके अमेरिका और यूरोप और UAE को भेज रहे हो, बट रॉ मटेरियल तो वहीं से आएगा. तो इसमें एक तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे यहाँ डिबेट होता है कि भाई देखो बायलैटरल डेफिसिट चाइना से 100 बिलियन हो गया, ये इस तरह से ट्रेड को देखना ही नहीं चाहिए. बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट्स आर मिसलीडिंग. See, for the longest time, China had a big surplus with the US, but it had big deficits with Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam. हाँ, कोई आपका सप्लायर है, कहीं पे आप बेच रहे हो, तो obviously. So, आप ये part of a global value chain. So long as you're adding reasonable amount of value and you have perspective कि 5 साल 7 साल में, जैसे अब अखबार में आया कि अभी एप्पल जो है बोल रहा है कि भाई हम बैटरी भी अब इंडिया से ही खरीदेंगे. बट चाइना के पास अभी, रिमेंबर दैट, जो भी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है, चाइना में वर्कर ही नहीं है. तो या तो वो वियतनाम जाएंगे, या कंबोडिया जाएंगे, या इंडिया आएंगे. So, and is what people have been talking about last 2-3 साल से, ये China plus one strategy. From what I understand, saying everybody who was heavily dependent on China is now saying is too much concentration risk in China. I need to diversify. तो जो भी काम चाइना में होता है उसका कुछ मेरे को और dependent partner चाहिए. And as you said, like probably Vietnam, Cambodia, India, and who else? Are there legitimate alternatives to that? How strong is that overall thesis? And one is again rhetoric. One is actual implementation. Is it happening and likely to be a big factor this decade? So, see, how about 2.5 years back, actually no, 2 years back, 3 years back, we did this study कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो, because this was after the US trade war, जो ट्रम्प ने चालू किया था, and so it was decided, so how many companies want to exit China? एक तो हमने काफ़ी लोगों को सर्वे किया, उसमें पता ये चला कि बहुत सारे लोग तो चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चाइना के लिए, तो वो तो चलता रहेगा बिकॉज दे हैव बिग बिजनेसेस देयर. बट जो चाइना में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे थे, जैसे मैंने बताया था पहले कि वो 3.2-3.3 ट्रिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स में 1 ट्रिलियन प्लस जो है वो मल्टीनेशनल चाइना में प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते हैं. नाउ a large part of that is because the supply chains are in China. तो लास्ट में असेंबली भी वही करनी पड़ेगी. बट एज यू वर राइटली सेइंग दैट अगर आपका 80-90% प्रोडक्शन अगर चाइना में है तो बड़ी समस्या है आपको, क्योंकि वो ये केवल ट्रेड वॉर ही नहीं, ये कोविड के कारण भी हुआ. अब क्या है कि जहाज जो है वो एक ही जगह पे खोजना पड़ेगा. अगर चाइना में कहीं कोविड शटडाउन हो गया तो फिर कैसे निकलेंगे. तो उसके बाद से उन्होंने सोचा कि भाई नहीं, अब 80-90% चाइना में नहीं रखना है, 40-50% रखना है, और जहाँ तक हो सके हम लोग अगर नॉन चाइना डिमांड है उसको चाइना के बाहर मैन्युफैक्चर कराते हैं. एंड प्लस रिमेंबर दैट वहाँ पे वर्कफोर्स एक्सपेंसिव हो गया है. सी इन द कोस्टल एरिया, सी चाइना के अंदर भी ना, जो इंडिया की डिस्पैरिटी हमने डिस्कस की, चाइना में भी है. जो कोस्टल एरियाज़ हैं, गुआंगडोंग, शंघाई, ये सब, शेंजन, यहाँ पे वेजेस आर समवॉट लाइक सदर्न US और सो इट्स नॉट वेरी चीप, और मेक्सिको, सो इट इज़ नॉट वेरी चीप एनी मोर. सो जो भी लेबर इंटेंसिव काम है उसको तो चाइना को ऐसे भी छोड़ना है. वर्कर मिल नहीं रहे अभी, तो आपको जगह खोजनी है. प्रॉब्लम यह है कि वियतनाम भी छोटी कंट्री है, मतलब कोर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट इज लार्ज, बट कंपेयर टू इंडिया एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स, वहाँ पे भी 2 ही हब है, एक हो ची मिन सिटी और एक हनोई. तो उन दोनों हब्स में काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है. वहाँ पे भी आपको इंटीरियर प्रोविंस में जाना होगा. इट्स लाइक सेइंग कि देखो भाई आप तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना सब भर गया, अब आप बिहार जाके प्रोड्यूस कीजिए, वहाँ पे मसलमैन को हायर कीजिए. सो वो चीन में भी कोई नहीं कर पाता है,
वियतनाम में भी नहीं कर पाएगा, तो वो जगह भर रही हैं, तो आना है इधर. So I think it is very real. It is not. It is going to Mexico. The work is going to Mexico. Work is going to Northern Africa. Okay, Europe में अगर आपको supply करना है, work is of course coming to India. Apparel very clearly has gone to Bangladesh. It's going to Bangladesh, Vietnam, Cambodia. So it is getting spread out. But let's say the firms were looking to now diversify out of China. I think in some ways, Vietnam and Cambodia have been investing into manufacturing for a while. They're more skilled workforce, also very close to China. So Chinese companies also have a setup there. Yes. While India, manufacturing is really lagging behind. So if China plus one is real, and if India has to really capitalize, कि वास्तव में लोग एक्चुअली यहाँ पे आके वो फैक्ट्री लगाएं, स्किल सेट हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आई थिंक आई बीन हियरिंग अबाउट कि काफ़ी सारे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम बोलते हैं जिनको, वो सब चल रहे हैं. तो हाउ डज मैन्युफैक्चरिंग 2-3 साल का काम नहीं है, उसके लिए वन हैज टू थिंक ऑलमोस्ट मल्टी डेकेड. तो वो इज़ द आर वी सीइंग एनफ क्रिटिकल मास एक्टिविटी to really enable the whole ecosystem? One of those, classic situations where, India disappoints the pessimist and the optimist, right? So we are winning some battles and we are not winning some battles. And I wish we won all battles, but unfortunately that's not how we work. So, so a lot of things have to happen. So you need to improve logistics infrastructure. So of course we have built more highways, as we discussed the last time. I think rail infrastructure is improving. So logistics, so inland movement is improved dramatically. Air travel is improved dramatically. Now you can fly in, fly out. Experts can come in, come out. State governments have become much more friendly in giving approvals. Yeah. You would have seen कि पिछले 7-8 साल में, though land is a state subject, we have not heard of any firing because of land acquisition policy. Because states have started to solve those problems. So जब ऐसा होना शुरू होता है तो आपका बहुत clearly, I think, becomes easier incrementally. And then the word of mouth goes around. Arey, India is no longer as tough as you thought, and so on so. But at the same time, remember that, अगर हमें global value chains का part बनना है, तो first stage में we have to get foreign companies in. जैसे 2005 में nearly 60% of Chinese goods exports were by multinationals operating in China. तो ये सोचना कि India becoming part of global value chains will happen in the first phase also through Indian companies is misleading. I don't think it's correct, and it's perhaps too optimistic. So शुरू में तो हमें foreign firms को लाना होगा. अब वो foreign firms अगर अपनी expertise, अपने लोग, अपने value chain, अपना IP लेके आएंगे, तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई यहाँ वर्कर टैक्स दो, या टैक्स देना भी है तो एटलीस्ट सर्टेनिटी होनी चाहिए. तो हमारे यहाँ क्या है कि वो टैक्स अथॉरिटीज समटाइम्स जस्टिफाइबली बट मेनी टाइम्स जस्ट टू हैरास ऑल्सो, वो कोई भी ग्लोबल CEO आएगा उस पर एक अरेस्ट वारंट डाल देंगे डराने के लिए. नो, लोगों को डर लगता है इस सब चीज़ों से. नो वन वांट्स टू गेट अरेस्टेड इन गोइंग टू एनी कंट्री. तो यू वांट टू हैव एन एडवांस एग्रीमेंट कि भैया हम इतना ही टैक्स देंगे, और वो अभी साइन ही नहीं होता इंडिया में. So there are many things that I think we should do better. We should maybe speed up the pace at which we sign tax agreements, advanced pricing agreements. We should I think speed up a lot of the clearance processes in some of the states. But I think there is sufficient evidence that that activity is picking up. PLI schemes by themselves may not be as large as people think. It has got very good publicity, and I'm glad that it has at least signaled to the world that India is serious about attracting manufacturing. Magnitude कितना है हर साल PLI का total quantum कितना है? That is the whole point, right? So total PLI budget incentives that have to be disbursed is 2.2 lakh crores, 2.2 trillion rupees. 2.2 लाख करोड़ का हो गया, मतलब करीब 0.7%. हाँ, 25-26 बिलियन. 0.7% of GDP, इस तरह से देखो. Right. और इसका डिसबर्सल होगा 7 साल में. ये क्यूमुलेटिव है 7 साल में, मतलब एनुअल मतलब $2-3 बिलियन हुआ. तो 2-3 नहीं, थोड़ा ज़्यादा, बट इफेक्टिवली 0.1% of GDP. तो सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स.
So you have to think about why PLI schemes came up. Now, no one has stated it, but if you think about it, you can come up with some basic principles. एक है कि वे ग्लोबल मैन्युफैक्चर छोड़ रहे हैं, उनको खींच के लाना है. देयर आर नेचुरल डिसएडवांटेजेस विच आर सप्लाई चेन लिंक्ड. जैसे वो जो चिकन एंड एग वाला प्रॉब्लम होता है ना कि भाई सप्लाई चेन तभी आएगा जब मैन्युफैक्चरिंग आएगी, और मैन्युफैक्चरिंग तभी आएगी सप्लाई चेन की. तो आपको शुरू में डिसएडवांटेज को 4-5 साल के लिए कम करना होगा. दैट इज़ वाई द मोबाइल फ़ोन स्कीम, PLI स्कीम वाज लॉन्च, विच आई थिंक इज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम. तो वो अच्छा चला. फिर क्या हुआ कि नहीं अब ये चल रहा है तो बाकी जगह भी करते हैं. बट उसमें प्रिंसिपल्स थोड़े डाइल्यूट हो गए. सो द ऑब्जेक्टिव्स वर टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज, टू रिवॉर्ड चैम्पियंस. बिकॉज सी इंडिया क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही कि भाई सोशलिस्ट की जो मिलेगा सब में बटेगा, राइट, विच इज़ फेयर. आई मीन आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट. प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपकी कंपनीज बहुत छोटी हैं तो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाएंगी. जैसे टेक्सटाइल मार्केट में ऐसा नहीं है कि हमारे पास मतलब हम तो मतलब हज़ारों साल से मतलब वो रोमन टाइम में भी सबसे अच्छा कपड़ा जो है इंडिया से ज़्यादा था, राइट. तो लेकिन अब कंपनी इतनी छोटी हैं कि ग्लोबल मार्केट में ये तो पूरा वॉलमार्ट जो खरीदता है फुटवेयर, केवल वॉलमार्ट का 1 साल का परचेज इज ऑल ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स पुट टुगेदर. तो छोटी छोटी कंपनी से क्यों खरीदेगा वो, राइट. उसको एक बड़ी कंपनी मिल गई चाइना में, वियतनाम में, ताइवान में, खरीद लेता है वहाँ से. सो हाउ डू वी गेट टू स्केल अप. सो दिस वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव कि दैट एक तो कि भाई चाइना जो बाहर से आ रहा है या डिसएडवांटेज कैसे कम करें, दूसरा कि हम बड़ी कंपनीज सेलेक्ट करें, और तीसरा था थोड़ा आत्मनिर्भरता. कि उस समय असल में वो कोविड के समय लॉन्च हुआ था. उस समय हमने देखा कि PPE और ये सब चीज़ों में कोई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, और चाइना ने दुकान बंद कर दी कि भाई हमें ज़रूरत है. तो कहा कि भैया वैसे नहीं चलेगा, पेंसिलिन और ये सब तो हमारे पास होना चाहिए. सो द डिफेंसिव वंस हैव डन ओके बिकॉज ठीक है पेंसिलिन कैपेसिटी बन गई. द वंस वेयर वी वांटेड टू अट्रैक्ट, अब जैसे वो सो देयर आर मेनी places where the scheme as it went to the ministry has kind of diverted away from the basic principles why PLI schemes were to be launched. So, but macroeconomically they were never meant to be important. So in the context of Neelkanth China plus one, and I think connecting back to जो पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था GDP ग्रोथ के लिए, आई थिंक फ्यूचर में अगर वो 7-8% करना है तो मैन्युफैक्चरिंग विल हैव टू प्ले अ बिग रोल, बिकॉज एग्रीकल्चर तो श्रिंक ही होगा, सर्विसेज रीजनेबली मैच्योर ऑलरेडी, शेयर में श्रिंक होगा, एब्सोल्यूट में ग्रो होगा शायद, राइट. बट मैन्युफैक्चरिंग विल हैव टू डू हैवी लिफ्टिंग. तो समवेयर आई थिंक is it too much to say कि the only way India can sustain this 7-8% for next 2 or 3 decades is by becoming a manufacturing powerhouse as well? So I think that's the key phrase, because see there is this discussion, or I think overemphasis on that. How can India become a services heavy economy without going through the manufacturing phase? Because that has been the traditional way in which change has occurred. Now, this ignores the fact that India is too large to be driven by only one force. See, जैसे अगर आप ताइवान है, कोरिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, तो मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करके और एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है कि अगर आपको 2 करोड़ लोगों को की इकॉनमी में ग्रोथ लाना है, आप 20-25 लाख लोगों को मैन्युफैक्चरिंग जॉब रीजनेबली हाई वैल्यू एडिंग करा के इकॉनमी को ग्रो करा सकते हो. अगर आपको 140 करोड़ की इकॉनमी में इम्पैक्ट लाना है तो उतना आप एक्सपोर्ट कहाँ करोगे, कौन अब्जॉर्ब करेगा. सो ये जो चीन की पॉलिसी थी, जैसे 2007-8 में उनका करंट अकाउंट सरप्लस 10% ऑफ GDP हो गया था. अब वो उस लेवल से तो डिस्टॉर्शन ही होगा जो हमने डिस्कस किया कि उनको दे वर फोर्स्ड टू होल्ड रिजर्व, बाय रिजर्व्स एंड एक्सेस कंजम्पशन इन द US, एक्सेस सेविंग्स इन चाइना, और फिर वो डिस्टॉर्शन हो जाता है, फिर वो सस्टेन नहीं हो पाता. जैसे इंडिया को भी अगर 3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी में अगर मतलब एक्सपोर्ट बहुत ज़ोर से ग्रो करना है, केवल उसी के बेसिस पे ग्रोथ होगी, तो आपको $1.5-2 ट्रिलियन तो कम से कम चाहिए होगा. मतलब सी यू आर डूइंग इट ओवर 10 years. तो पूरी ग्लोबल ट्रेड ये भी 25 ट्रिलियन है. उसमें से अगर आप इंट्रा यूरोप वगैरह निकाल दो तो नंबर बहुत कम हो जाता है. सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू ओनली एम्फसाइज
on goods manufacturing. At the same time, from a self-sufficiency perspective, see, remember that you need to have manufacturing skill sets. So you cannot be relying on imports of hard technology and manufactured goods. So domestic demand को meet करने के लिए भी manufacturing चाहिए. So we need manufacturing. There's no denying that. But remember that the basic reason why FDI was considered important was not just that you got, some goods to export, but also that you got technology and you got capital. Now, India, remember that in modern services growth, so India is already 8% of global modern services exports. So India's global share of GDP is 3.5. And what are modern services, right? So modern services are anything that does not require physical presence. जैसे ग्लोबल ट्रेड में, सर्विसेज ट्रेड में एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो टूरिज्म का है. इसमें इंडिया लैग्स बिहाइंड. हमारे पास देखने को बहुत कुछ है, बट वी डू अ टेरिबल जॉब ऑफ गेटिंग पीपल टू कम एंड सी इट. दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विस. जैसे आप गुड्स एक्सपोर्ट्स में डोमिनेंट हैं तो आपका फ्रेट डोमिनेंस होगा, आप शिपिंग में डोमिनेंट हो गए, आप इंश्योरेंस में डोमिनेंट हो गए, उस तरह का. उन दोनों चीज़ों में हमारा कोई शेयर ही नहीं है. बट not just IT services, business services exports. So, business consulting, data processing, risk modeling, financial services, cyber security, running virtual fabs, chip design, इन सब चीज़ों में डिज़ाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब चीज़ों में हम बहुत ज़ोर से ग्रो कर रहे हैं. और दिस इज़ ऑलरेडी एडिंग. तो जैसे आप समझ लो $350 बिलियन का हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट है, राइट? एंड द वैल्यू एड इन दैट इज़ वेरी हाई. जैसे $450 बिलियन का हमारा गुड्स एक्सपोर्ट है, उसमें मेरे हिसाब से बहुत सारा जो है वो बहुत लो वैल्यू एड है. आप $100 का ऑयल इंपोर्ट करो, $105-160 का पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट कर दो, या आप $50 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट करो और $55 बिलियन की ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर दो, या जेम्स, उस तरह से. बहुत छोटा वैल्यू ऐड होता है. तो मतलब मेरे ख्याल से 450 में से 150 या 130 होगा. ये 350, 340, 350 में से मुझे लगता है कम से कम $250-280 बिलियन जो है डोमेस्टिक वैल्यू ऐड होगा. सो इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू ऐड, एंड देन इट ऑल्सो ट्रिकल्स डाउन. बेसिकली लोग फिर घर खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, स्कूल भेजेंगे, तो किन सबको पैसा मिलता है इसमें. तो and this is growing very rapidly, and India has an edge here. Yeah. India is also seen as a trusted partner. So geopolitics में एक और बड़ी चीज़ होती है कि लोग आपको ट्रस्ट करते हैं कि नहीं. तो अभी partly because of our diaspora, because of CEOs of all companies, large companies are Indians, and India also, I mean, we went about it, maybe, I don't know, by design or by accident, but in a very friendly way. मतलब हमने ऐसा नहीं किया कि भाई आप इंडिया आइए और आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपको हम परमिशन नहीं देंगे ना. हो सकता है कि वो अब कुछ चाइनीज़ फर्म्स वगैरह के साथ हो रहा हो, बट मोस्टली वेस्टर्न फर्म्स तो मतलब जो लेके आया, मतलब कोई चोरी वोरी का रिस्क नहीं है. सो फर्म्स आर वेरी हैप्पी गिविंग दैट बिजनेस टू अस. सो दिस कैन बी ऑल्सो बी अ वेरी मीनिंगफुल पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ. Got it, clear. All right, so this whole, manufacturing, we discussed that in the context of US, China, dynamic shifting, China plus one, and all of that. And it's a one big opportunity, but acknowledge the point that services is our strength. Growing value add, as you said, is massive and probably will continue to be a big driver for future growth as well. Let's look at other aspect of global geopolitics. तो अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है. एक तरफ हम सोच सकते हैं इंडिया में चलो वहाँ पे यूरोप में कहीं कॉर्नर में चल रहा है, अब क्या फ़र्क पड़ता है उससे. But historically, Russia has been a very close ally. Even during this war, as I understand, India was one of the biggest importer of Russian oil while the war is going on, and as a result, that also benefited our economy because we are able to buy oil from them at a much cheaper price. I don't know what, or maybe not, you can clarify. I don't know what America thinks about it. Maybe they are also okay because it's keeping a global oil production at a certain level. Otherwise, prices shoot up everywhere, inflation will go up even more, all of that. And abhi, but इंडिया यूएस की रिलेशनशिप बढ़ती जा रही है, एज यू सेड कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मेजर एग्रीमेंट हो रहे हैं एंड सो ऑन. बट हिस्टोरिकली हमारे सारे वेपन्स वगैरह रशिया से आते थे, अभी भी शायद काफ़ी इंस्टॉल बेस तो वहीं का है.
तो ये Russia-Ukraine war, is it relevant for India at all? And also, the way things are shaping up, what is India-Russia relationship going to be in future? So I think it is important at this stage to take a step back and think about how India should approach it. And why is geopolitics so important? Why is it that... See, अगर आपकी इकॉनमी छोटी है, आपकी कंपनी छोटी हैं, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है. अभी क्या है कि you see even in the Gulf War, right, first Gulf War, there were evacuation flights, right? अभी इंडियन डायस्पोरा हर जगह है. जैसे यूक्रेन से भी मेडिकल स्टूडेंट्स को वापस लाना था. बट ये सब तो छोटी चीज़ है, मतलब जो लोग इन्वॉल्व थे उनके लिए बड़ी चीज़ थी, बट इकॉनमी के लिए तो अभी क्या है ना कि आपका जैसे जैसे आपकी इकॉनमी बढ़ेगी आपका बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा. व्हाई डू यू थिंक अमेरिका इज सो इन्वॉल्व इन द गल्फ? बिकॉज बहुत दिन तक, अभी तो क्या चलिए 16 मिलियन बैरल पर डे खुद का ही ऑयल प्रोड्यूस कर लेते हैं, बट जब उनको ऑयल चाहिए था दे नीडेड स्टेबिलिटी देयर. तो जैसे अभी अगर वेस्ट एशिया, जो मिडल ईस्ट अमेरिका बोलता है, हमारे लिए तो वेस्ट एशिया है, तो वेस्ट एशिया हैज़ ऑलवेज बीन आवर ट्रेडिंग पार्टनर. इंडियन रुपी 1970 तक वहाँ पे वैलिड करेंसी थी. और इट इज़ जस्ट perhaps Dubai is closer to Bombay than Calcutta. So the point is that उस जगह पे अगर वायलेंस होता है तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को असर पड़ता है. नाउ आप जब समस्या होगी तभी आप नहीं जा सकते हैं, आपको वहाँ एंगेज रहना होगा. जब प्रॉब्लम शुरू होती है तब जाके आप दोस्त नहीं बना सकते ना, आपको दोस्ती तो पहले बना के रखनी होगी. वैसे ही अब ये क्लियर हो गया है कि जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो आइसोलेशन में उनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई आके अपना उल्लू सीधा कर रहा है वहाँ. तो मैं नहीं कह रहा कि हमें भी उल्लू सीधा करना चाहिए, बट इफ़ वी हैव टू हैव एन इन्फ्लुएंस वी नीड टू स्टे एंगेज्ड. एंड सो in 10 years time, in 20 years time even more, हमारी कंपनीज जो हैं उनका प्रेजेंस होगा. अभी जैसे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप काम क्यों एस्पायर कर रहे हैं? क्योंकि जब अफ्रीका में ग्रोथ होगी, बट अफ्रीका इज अक्रॉस द पॉन्ड, right? Arabian Sea, I mean, the global context is like a pond, right? So it is, and we've always had deep relationships with them. You go to Tanzania and Kenya, you get Indian curries, right? Effectively. So इन सब जगहों पे अगर हमें अपना प्रेजेंस बिठाना है. अच्छा, अभी क्या हो रहा है अफ्रीका में? चाइना घुसा हुआ है. बहुत सारी जो फ्रेंच कॉलोनीज है वहाँ पे फ्रेंच आर्मी बैठी रहती है. सो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड. सो वी हैव टू बी अवेयर that as India grows its economic footprint, Indian companies will grow, our interest will grow. I'm not saying that we should get into, influencing the politics of places, though you can sense that in some of the smaller places, अगर आपका competitor वो कर रहा है, तो आपको भी involve होना पड़ेगा. I mean, there are some island countries जहाँ पे, there's a lot of headlines around it. But it is very important to India to stay engaged, because that is how you control your competition and you create a favorable ground for Indian principles, Indian companies, all to propagate. Right. So as a rising power, and we'll have interdependency. Some of those countries will be markets for us, or source of labor, or raw material, or whatever, right? And so on. But just going back to Neelkanth, to Russia for a second. अभी रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन किधर जा रहा है? आई थिंक वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट, बट फ्यूचर थोड़ा चेंज हो रहा है. See, so I'm sorry, I forgot to answer that question about oil, right? We think about it, कितना बचा इंडिया का, right? ये जो वेस्टर्न मीडिया का ये जो ऑब्सेशन है, इनफैक्ट यू गो एंड मीट फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड यू हियर कि अरे इंडिया तो वारे न्यारे मतलब फ़ायदा उठा रहा है. एक बार क्वान्टिफाई कीजिए. इंडिया $1.5 billion, सॉरी $150 billion, नहीं, सो $1.5 billion बैरल पर ईयर इंपोर्ट करता है. कितना? $1.5 billion वर्थ. 1.5 billion बैरल पर ईयर. तो $1 पर बैरल इज $1.5 billion. ठीक है, मान लीजिए कि
कुछ महीने तक 25-30% of oil came from there. तो अगर अच्छा उसका लैंडेड प्राइस कितना कम था, वो हो सकता है कि $25 मतलब यूरल्स का स्प्रेड हो ब्रेंट पे. यूरल्स इज द अमेरिकन द रशियन ग्रेड, बट क्योंकि वो उसका जो लॉजिस्टिक्स का पाथ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और न्यू है, तो कॉस्ट ज़्यादा है उसमें. लैंडेड प्राइस मेरे ख्याल से $10-12 से ज़्यादा नहीं है. शुरू में तो 8-10 थी, थोड़ा वो इम्प्रूव हो गया होगा. तो अगर आप $10-12 पर बैरल फॉर 25% कर रहे हो, आप 30% ले लो तो $3 बनता है, राइट? $3 तो आपका $3 बिलियन, $4 बिलियन, आप $5 बिलियन ले लो यार. 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में मतलब हवा बना रखा है. और आप देखो कि जो अभी डेटा आया है कि जर्मन एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स टू कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हैव गॉन अप बाय 500%, 700%. वो गाड़ियाँ थोड़ा जो कजाकिस्तान में बिक रही हैं. ये इन सब चीज़ों पे ना मतलब आई थिंक सी एवरीवन प्लेज दिस गेम्स, बट वी हैव टू लर्न हाउ टू प्ले दिस गेम्स एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड अदर पीपल्स गेम, राइट? सो आई डोंट थिंक वो रशियन वाला ठीक है. बट रशिया की रिलेशनशिप क्या है? बट आई थिंक सी रशिया इज जियोपॉलिटिक्स में I mean, you need to have principles because see, India stands for strong principles, and I think it is, and they are not just empty principles. मतलब ये नहीं कि भाई हम कुछ भी हम आपको कंट्रोल करेंगे लेकिन हम फ्री स्पीच पे बिलीव करते हैं ना. So ऐसा नहीं है. So you have to have principles which you adhere to, but at the same time you have to have pragmatic interests. अब अगर तो you can be against the fact that you cannot unilaterally invade another country and trigger a war, which I think India has stated very clearly. But at the same time, knowing the reality that if you antagonize your biggest arms supplier, and given how dangerous it can be, because Russia is fuel rich, if you let and mineral rich, if you let Russia be isolated, वो सीधा चीन के हाथ में जाएगा. तो आप वो जो कंबाइंड ब्लॉक है उससे झगड़ना चाहते हो. जैसे इट इज़ रिमार्केबल दैट जब चीन को पता था कि वो बहुत छोटा है, राइट, 1990s में, बट अमेरिका को कंट्रोल करना है, बिकॉज सी द फर्स्ट थिंग इज यू डोंट वांट टू बिन देम टू बी ट्रबलिंग योर नेबरहुड. तो जो भी रीजनल ग्रुपिंग्स थे, कहीं पे अमेरिका भी घुसा हुआ था, उसमें सब ने जाके चाइना ने मेंबरशिप ले ली. जैसे लोग इंडिया का पूछते हैं, एंड सी दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, आई हैव नो आइडिया कि अंदर में क्या सोच रहे हैं, मैं तो दूर से देख रहा हूँ. जैसे अब SCO में क्यों है इंडिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई इज देयर, व्हाई इंडिया इज देयर नाउ? बट द होल पॉइंट इज दैट इफ यू आर नॉट इवन एट द सीट, यू डोंट हैव अ सीट एट द टेबल, हाउ विल यू इन्फ्लुएंस एनीथिंग? तो चाइना क्या करता था वहाँ जाके कि हाँ सब एजेंडा में हाँ लेट्स थिंक अबाउट इट, यस वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू बेसिकली जॉइन द ग्रुप टू मेक इट डिसफंक्शनल, राइट, और लेस फंक्शनल. And in the process, you serve your own interest. So I think it's important for India geopolitically to perhaps engage on as many fronts as possible with its self-interest in mind. And I do think that we need to increase our bandwidth in the sense that you saw when this Canadian fracas was happening. So the reason why Canadian diplomats were asked to leave India was the principle of proportionality. कि हमारे इतने हैं तो आपके इतने. So imagine, हमारे लोग ही नहीं है वहाँ पे. Right? You will see that small countries have consular offices in multiple cities in India. And some of them actually are clued in. वो local government से track करते हैं कि हमारी कंपनी के इतने लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया. हम करते हैं क्या? So we need to expand that bandwidth, I think, and I think work is happening. I mean, what I can see from what I read in the press is that there's a lot of work happening towards expanding our capabilities. Recently, the new flashpoint is, I mean, this is simmering for a long time, but has come to a hit in this the war in Gaza now. How is that relevant from India point of view? From understanding historically, and you also alluded to it, we have had a deep ties with Arabic countries in the past.
now Israel is very, I think, the geographical location and relationship with neighboring countries has been very tense for variety of reasons, right? We don't need to go into that. But India is also, I think, our relationship with Israel is growing in the past. It's definitely a lot better today than, I guess, probably 20 or 30 years. So how important is that, how should, again, India, beyond, let's say, we probably should be friendly with everyone because we're interested in everyone. But again, geopolitics, beyond a point, you can't be really, friendly with everyone, right? No, I think, that's a very important observation, that you can't be friendly with anyone, but you can be seen as a principal player. So, if, okay, so, and this is another point where I think the connection between domestic aspirations and politics and international politics, how linked they are. So most of the time, people in most countries are not really bothered about what's happening in the world, right? If you see any of the American TV news channels, some dog jumping into the well is perhaps newsworthy, but big wars happening somewhere else, people not even bothered about it, right? So, but when some things very important happen, like Vietnam War, because soldiers were going and dying, so that people got involved and it becomes a major issue. So, I think the domestic side of the politics, so basically, will it be seen as hurting electoral prospects if you side with one part or the other in a clearly a religious battle, is something that has also influenced some of our policies in the past. And you can't wish those things away, because the fact is that we have a multi-religious secular country, and therefore it is important to keep all interests aligned. But at the same time, I think as we venture out in the world and our views start to matter, and we can also, so far we are not trying to influence outcomes directly, though we have opinions, or at least we are not openly trying to influence outcomes. But as we become larger and more important, we will have a seat at the table and people will look at us कि बस आप क्या कर रहे हो, तो हमें वो principles के बारे में सोचना होगा कि भाई किन principles पे हम, so that we become more predictable, that we don't become unpredictable and then we become untrustworthy. So I think developing trust, but at the same time having a seat at the table. जैसे कल को अगर वेस्ट एशिया में आग लग जाती है, जैसे क्या होता है कि सड़क पे झगड़ा हो रहा है, कुछ लोग तो मतलब और हाँ लड़ो मजा आ रहा है, मतलब और कुछ होता है कि भाई अगर एक लेवल के बियॉन्ड गए लोग लाख गुस्से करने लगे तो भगवान। तो वैसे ही इट इज़ इन आवर इंटरेस्ट कि वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मतलब ज़्यादा बढ़े ना। तो engaging with Iran, engaging with Saudi Arabia, engaging with Israel to make sure Jordan and all the other Qatar, all of the other parties कि भाई आप लोग इस झगड़े को और बढ़ाएं ना। I think what I'm also kind of maybe hearing from this Neelkanth is जैसे इंडिया का साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है, तो perhaps India will have to take a lot more proactive interest in the affairs of the world because we're going to be affected by it. जैसे अगर कल को वहाँ पे ईरान ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो हिजबुल्लाह और किसको एक और फ्रंट खड़ा कर दिया, and suddenly then everyone is forced to take sides. See, this is how wars happen, right? So, or wars become bigger, is that everyone is forced to take sides, and then suddenly everyone is bombing each other. और मरे हम, deal हमें चाहिए. Correct. So I think keeping that interest in mind and telling everyone कि भाई झगड़ा झंझट किसी के फायदे में नहीं है, आप लोग आराम से बात करें, and then because you are a trusted partner for everyone, you can actually be a communication channel, right? So you can actually calm things down instead of being seen as interested in provoking conflict. But you're absolutely right that it is as we grow bigger, we will get affected by global winds. More than anything, some of these conflicts can actually potentially benefit strategic competitors. Yeah. So you need to be involved. अब जैसे छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे यूएन में वोटिंग कैसे हो रही है, वो छोटा कोई आइलैंड है वहाँ पे, मतलब 50,000 लोगों का आइलैंड है, पर उसका एक वोट है यूएन में, आपको वो से दोस्ती करके रखनी होगी।
Speaking of votes in UN, so and you talked about a seat on the table. One of the biggest seats in the table that India is missing is the Security Council, and which is bizarre. I mean, if you look at the size of economy, 18% of the world population, and I don't know how much truth to this story. At some point, apparently, it was offered to India. Yeah. I don't know whether and the then Prime Minister thought it was probably not in our best interest to engage because we're pursuing online. But I don't know the story is true or not. But I mean, it's still continues to be bizarre. It was possibly on offer. I mean, I'm also not a historian to have a convincing stake on it, but it was most likely on offer, and we decided that it'll be in interest that in the interest of the non-aligned movement that China sits on the table. But that's not relevant today, right? This is now 75 years later. I think if you go back to the starting point of the discussion, कि हर 80-100 साल में एक realignment होता है. So क्या है कि अभी केवल इंडिया ही नहीं, इमर्जिंग मार्केट्स का, सो ब्राज़ील मेक्सिको का भी की इकॉनमी काफ़ी बड़ी हो गई है, इंडोनेशिया भी काफ़ी बड़ी इकॉनमी है, 10 साल में और बड़ी हो जाएगी. जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दे वर नॉट ऑफ कोर्स दे वर काइंड ऑफ could not have been given a seat at the table, but now they have proven to be a responsible player, rules-based player and all that. So तो इसलिए मुझे लगता है कि UN Security Council, other than these vetoes कि मैं आगे करूँगा, तुम वीटो करो, मैं वीटो करूँगा, मतलब कुछ होने वाला नहीं है. I think एक नया forum, sometimes as they say, good ideas grow and then they sort of outcompete the bad ideas. So maybe UN in its current form, unless proper reform happens, is not relevant. And therefore G20 is the right forum. Because the large, and then even the expansion of the G20 and bringing in Africa in it makes it a truly global forum, and so a number of issues can start getting sorted out there. So yeah, I think it's in everyone's interest that over the next decade, 15 years, it sounds like wishful thinking at this stage, but we evolve these forums so that the issues get sorted out in a peaceful way. कि जैसे trade conflicts हैं, environmental conflicts हैं, because I think it is absolutely scary the way climate change is happening, and this is one place where national boundaries don't matter. Yeah. And so everyone needs to work together, but वो हर कोई अपना ही interest में काम कर रहा है. So we need these forums where some of these collective problems are solved. जैसे World Trade Organization भी more or less ineffective हो गया है. I mean, it still exists, and people are cognizant that it exists, but people are taking industrial policy actions, protectionist measures, and no one is daring to challenge. I mean, what the Americans have done. When the Europeans are aghast, the Koreans are aghast, and they're all partners of the US, right? But this small yard high fence, most people think that the yard will keep getting bigger. Small yard high fence is that कि हम फ्री ट्रेड में बिलीव करते हैं, बट एक छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे कि हम पूरा बैरियर लगा देंगे. इसमें चीज़ों में समस्या ये होती है कि भाई वो छोटा सा एरिया जो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है. तो इन सब चीज़ों में फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या फिर? So I think new organizations need to evolve. As I was saying, it is in our interest and everyone's interest that this happens without a big war. Yeah. And so among the the new forums emerging, so obviously G20 is one of them. What is G20 mostly about geopolitics or more about economic collaboration? What is the intent of G20? And also, recently, obviously, India had the leadership. Earlier, you mentioned that India's leadership has been fairly successful and good collaboration despite resistance from China. So, maybe two-part question: what exactly is G20 trying to achieve as a group, and what was the success that is attributed to India's leadership? So, see, the G20 started off primarily as an economic group, right? Basically to solve economic issues. 2008-9 में it had major gains where people realized that there were disruptions in the global financial system, और फिर उसको collectively कैसे solve करें, कोई growth stimulus दे रहा है, so there was fair degree of financial collaboration.
उसी के कारण जैसे ग्लोबल जो इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, सी लास्ट 20-25 साल में while we always had trade and financial integration, they become much more interlinked. So like जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक क्रिएट हुआ, which whose only job is to track कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे चल रही है. We now have collective systems for banking stability. So there are a lot of these economic and very important issues which sound, which are not considered important because they're not in the public eye. But it is one of those things कि जब नहीं होता है तो फिर बहुत important लगता है. But हो रहा है तो ठीक है, सब कुछ smooth चल रहा है. I think G20 started off like that. But with some of the recent developments, like say getting a joint declaration or on say the Russia-Ukraine conflict कि मतलब क्या stance है सबका. अब होता क्या है कि उसमें to get everyone to sign off on the same thing itself is an achievement. Because कोई उसको उसमें कोई clause चाहेगा, कोई उसमें clause. So these are diplomatic victories where once you get everyone on the same page, then it's human nature, right? वो कहते हैं ना कि भाई लिख के दे दूंगा. तो अगर आपने लिख दिया है तो अगली मीटिंग में आप किसी भी कंट्री से हैं, आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब वो हम अग्री नहीं करते, बिकॉज यू हैव साइंड ऑफ ऑन दैट एग्रीमेंट. सो आई थिंक ये डिप्लोमेसी में थोड़ा टू गेट स्पीडियर चेंजेस यू हैव टू गेट इनटू वॉर व्हिच इज इन नो वंस इंटरेस्ट. सो फिर वही इंचेस करके होता है. सो दीज आर आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ कंसेंसस व्हिच डिड नॉट इमर्ज इन इंडोनेशिया. Was I think the big achievement. Other group that is I think emerged, I don't know exact history, but Quad. What is Quad? Is it relevant? Not relevant? It's seems to be like a counterweight against China in South China Sea, as from whatever high level I understand. What is the relevance of Quad? So Quad is So ये मतलब भाई actually I also don't know exactly कब शुरू हुआ था, but 2007-8 से तो चल रहा है. But it has become much more prominent in the last 5-7 years, where everyone, India, China, Japan, Australia have all figured out that in one way or the other they were being bullied by China. तो they said कि भाई ठीक है, तुम ऐसे इंडिविजुअल झगड़ा करोगे तो फिर हम साथ में आ जाएंगे. And अभी भी if I talk to individual diplomats, not that I do that on a regular basis, but in some of the forums you get to interact with them, you sense that उस लेवल का ट्रस्ट नहीं है. मतलब इट्स नॉट दैट कि जापान को आज लग रहा है कि कल को हमारा अगर चाइना से वॉर हो गया तो इंडिया अपने वॉरशिप भेज देगा, या ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि एंड सी ट्रूथ इज़ कि वॉर में ये सब अलायंसेस जो हैं वो बहुत डायनेमिक होते हैं. मतलब आप पहले कितनी भी चिट्ठी लिख लो एक दूसरे को वो जब लड़ाई होती है तो सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आ जाते हैं. तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऑस्ट्रेलिया वाज लेफ्ट फॉर इट्स ओन डिफेंसेस, राइट? दे हैड टू फाइट फॉर देमसेल्व्स डिस्पाइट हैविंग ऑल द सपोर्ट एंड रिटन एग्रीमेंट्स. सो तो ये डिस्कम्फर्ट तो रहेगा ही. जैसे इंडिया को भी रहेगा कि भाई अगर हमारा फाइनल लड़ाई हुई हमारी तो जापान अपने वॉरशिप्स और ऑस्ट्रेलिया अपने वॉरशिप भेजेगा क्या, अमेरिका ही भेजेगा क्या? बट at the same time, I think by seen as working together and cohesively, you prevent the other guy from becoming more venturesome. Right? मतलब वो उसको एक सिग्नल जाता है कि भाई ये चार मिल रहे हैं और अगर आप ज़्यादा तंग करेंगे तो ये और solidify हो जाएगा. And what also happens is once you start having joint naval exercises, see, remember that in order to fight together, suppose in an hypothetical scenario, you need to have comfort. कि भाई comfort या मतलब कि क्या engagement protocol क्या होगा, किस भाषा में बात करेंगे, ये दो जहाज जो हैं वो मतलब कैसे कौन आगे कौन पीछे, whatever. I mean, I'm oversimplifying it, but you need to have ways and ways of working with each other, understanding. अच्छा ऑस्ट्रेलियन नेवी का ये हायरार्की होती है, उसमें इससे बात करते हैं. अगर चार जहाज जा रहे हैं तो आपस में ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं, इंडिया वाला ऐसे करता है. So having some understanding, I think, helps potentially. And is that so? This all the 4 Quad countries. Do you think the clout of Quad is increasing some ways? Is there intent to strengthen? Definitely is, right. But इसमें भी there are so you realize, and this is a classic sign of geopolitical turmoil, कि एक ही साथ में हर कोई डिफरेंट फोरम्स में एंगेज कर रहा है. अब जैसे कोई AUKUS रिलेशनशिप है, राइट? ऑस्ट्रेलिया, US एंड UK. उसमें उन्होंने फ्रांस को करा दिया,
बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थी, तो उसमें यूके और यूएस ने मिलकर उनको दिया, तो फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का एक अलग ब्रदरहुड बन गया. वैसे ही इंडिया कुड बी क्रिएटिंग अ ग्लोबल साउथ काइंड ऑफ ब्रदरहुड कि भाई हम लोग साथ में मिलके क्लाइमेट इश्यूज़ पे विल बार्गेन टुगेदर एंड ऑल दैट. सो तो ये मल्टीपल ग्रुपिंग्स होंगी एंड दीज आर ऑल वेज ऑफ कीपिंग एंगेजमेंट चैनल्स. होंगे जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स का कोई मतलब ही नहीं है. ब्रिक्स वाज irrelevant हो गया आई थिंक अभी तो. That's what I used to think, and I still think it should be relevant. But because BRICS came out of some random clubbing together of by some investment bank, right? Correct. 4-5 कंट्री का नाम बना के उन्होंने कर दिया, और उसको अब वो the trajectory of these economies has moved in very different directions, geopolitical. But why is it still alive? See, किसी के पास भी फालतू समय नहीं है, right? I mean, if you think about it, I mean, like the foreign ministers of ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अभी होती है ब्रिक्स की रेगुलर मीटिंग. हाँ. अच्छा, अरे अभी मेजर एक्सपेंशन हो रहा है. एक्सपेंशन. या सो किस कंट्री को इनवाइट करना है, तो यही सब चीज़ों में होता है ना. कि अभी ऐसे मान लीजिए कि ब्रिक्स में इंडिया ने कहा कि भाई अभी फालतू है, इसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, बट अब वो ब्रिक्स में ही 4 कंट्रीज और आ गई. अब उसमें किसी ने एक फोरम कर दिया कि नहीं अब हम लोग फूड पे कोलैबोरेशन करेंगे. तो जैसे चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो मैं ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ. चाइना इज डेफिशिएंट इन फूड, सो देयर बिगेस्ट वरी इज कि लड़ाई होगी तो वो फूड के थ्रू हमें टाइट करेंगे. तो इसलिए लास्ट 2-3 साल में, मतलब लास्ट ईयर तो नहीं, उसके पहले 2-3 साल तक वो जोर से अपनी फूड इन्वेंट्री बढ़ा रहे थे. कॉर्न, वीट, ये सब का इन्वेंट्री बढ़ रहा था. प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे भी स्टोरेज बहुत ख़राब है, 2-3 साल में सब सड़ना शुरू हो जाता. एनीवे, पॉइंट इज़ कि अगर उस तरह का उन्होंने एक ग्रुपिंग में जाके बोला कि भाई नहीं इसमें ये फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उनको हम ले आते हैं और उनके साथ हम एक अलायंस कर लेंगे, तो भाई इंडिया को क्यों नहीं होना चाहिए. वहाँ पर बैठ के अगर वो दिख रहा है कि वो अलायंस कर रहा है तो भंडाफोड़ करो उसका. समझ गया. सो चाइना पहले कर रहा था. एग्जैक्टली. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे एंगेज. यू कैनॉट डिसएंगेज. एंड so there are many. So the reason why I said like Quad is one of many. For that's, see, I am not a geopolitical expert. मतलब इकोनॉमिक्स ही समझ में आ जाए ठीक से तो बहुत किस्मत होगी. But the way I understand it, it is one of those areas where you don't have clarity on which way the world is headed, and therefore you cannot let go of any opportunity to engage with some other. समझ गया. Other big area which is I guess intersection of economic interest and geopolitics. कि overall what you I think earlier mentioned, how is the world going to come together to fight climate? Now it is very deeply linked with the economic issues. Abhi India is 3.54% of world GDP, and I think India carbon emission भी roughly उतना ही है जितना total produce होता है. Now we all recognize कि environment is headed in the wrong direction in our life. I mean, we are already seeing some adverse consequences, and they are only going to accelerate. While total carbon emission अभी बढ़ ही रहा है. जितनी बातें, ट्रीटी, सब कुछ हो गया, अगले साल इस साल से ज़्यादा होगा, उसके अगले साल इस साल से ज़्यादा होगा. पीक कार्बन का कुछ बोलता है 28 में होगा, 2035 में होगा, हु नोज कब होगा, राइट. एंड अभी भी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज टू बी फॉसिल फ्यूल. तो उसको लाइक होल इकोनॉमिक्स ऑफ कार्बन इकोनॉमी, हाउ शुड इंडिया डील विद इट? लाइक एट सम लेवल economic growth is very important. I don't think India will make any choice which curtails the economic development, because otherwise a lot of people will forever be stuck in poverty. On the other hand, India has also promised we want to be carbon neutral by 2070. Like it looks like there is some intensity building around, COP28 is coming up now. And so what is the mental model? India कैसे इसको approach करे? Because there is some deep conflict within it. अगर हमें 50 साल और होते तो बढ़िया रहता था, आराम से पहले इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर लेते जो वेस्ट ने किया है, फिर आराम से कार्बन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते. That's a very important point. That and this is the I think as we get our collective thoughts together and all over the world, I think the fact that जैसे सीमेंट में काफ़ी कार्बन इमिशन होता है, राइट. बट अब जैसे किसी ने घर बना लिया तो उसका तो हो गया, राइट. अब घर तो चलिए 50-60 साल में बनता है एक बार. तो अब जो पिछले 200 साल में जिन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइज किया है, उन्होंने तो कार्बन एमिट कर दिया, वो तो कार्बन है हवा में. तो केवल रन रेट पे क्यों असेस कर रहे हैं? जो आपने एक्यूमुलेट किया, क्यूमुलेटिव, तो आप वो कैलकुलेट कीजिए और वो कर लीजिए. अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ग्रीन हाउस एमिशन का है.
अभी जैसे मीथेन is some 60 or 80 times more greenhouse has a stronger greenhouse effect than carbon dioxide. Or मतलब the methane emitted by livestock is not part of anyone's calculation. Right? So meat consumption, beef consumption and all that. So अभी भी मेरे हिसाब से the rules of engagement are still being drawn up. India, you're right. I don't think can afford to see on a per capita basis what we emit. See 4% when our population is 18%. See, अगर आपको इसमें principle लगाना है तो every citizen, every human has an equal right. Correct. हालांकि आप अमेरिका में है इसलिए आप मतलब पर कैपिटा बेसिस पे हमसे 50 गुना या जो भी 40 गुना कार्बन एमिट करोगे. That's wrong. Correct. And so, but you know, इसमें क्या है कि वो अग्रीमेंट आने में बहुत समय लगेगा बिकॉज पॉलिटिकली थिंक अबाउट अ पॉलिटिकल लीडर हु इज बार्गेनिंग ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका, राइट. वो तो ट्रम्प जैसे ही बिहेव करेगा. वो तो बाइडन है कि थोड़ा सुलझा हुआ बिहेवियर है. ट्रम्प जैसे लोग तो है शायद ट्रम्प ही करेगा. वो आगे बोलेगा मैं नहीं कर जाओ. राइट. सो आई डोंट थिंक देयरफॉर देयर इज, आई मीन सैड एज इट इज कि कोई मेजर इसका सोल्यूशन है जो जिसमें द वर्ल्ड कैन कम टुगेदर एंड यू नो ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन. द ओनली गुड थिंग अबाउट इंडिया, or not a good, only good thing, it's a very good thing about India is that 80% of the infrastructure we'll need in 2050 has not been built yet. So अब जैसे पावर प्लांट हमें ऐड करने हैं, ठीक है, अभी बेस लोड ही खत्म करा हुआ था, फिर से पता थर्मल पावर चाहिए होगा, बट होपफुली दिस इज द लास्ट वेव. उसके बाद we can then start investing in renewable energy. There is a lot of good work happening on green hydrogen. There is a lot of work happening on energy storage. And आज नहीं तो कल कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भी 10-15 साल में ठीक हो जाएगी. So even if we don't all come together, so long as we are moving in the right direction, hopefully the intensity of the problem will. But you know, we have to get ready कि वो Arctic route for shipping will be open. Large parts of cold deserts will become amenable for farming. Rainfall patterns will differ. Like monsoon intensity has been wavering off, right? So it has been coming off. So those we have to get used to. I think that seems inevitable. अभी तो मतलब हर साल adverse climate impact events are only increasing, and this is when we are yet to hit the peak carbon usage. At some point peak होगा, और peak जब decline भी होगा, इसका ये मतलब नहीं कि overall environment कम हो रहा है, हम ऐड कम कर रहे हैं. नहीं, बट ऐड होता रहेगा. And there is a compounding effect. Correct. See, and there is also that as the permafrost warms up, a lot of gases which are trapped there will start coming out. Yeah. And then as the reflective power of snow and ice disappears because there is not so much snow and ice, so the heating will then start going up. Yeah. So there are many, but you know, at the same time, remember that, and this is my being just hopeful. उम्मीद तो दुनिया का है, right? कि वो there are many other things that also change, right? So these are such complex modeling problems that you don't know. Maybe you know, large deserts suddenly become, जैसे Egypt. You read the time when pharaohs were in power. It was a green area, right? पिछले 2000 साल में वहाँ पे डेजर्ट बन गया है. तो कहाँ पे ग्रीन एरिया जाएगा, कैसे लोग माइग्रेट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. Got it. Just like coming to very close to, you know, Indian subcontinent. Now we are a very large country surrounded by a lot of small countries. और सबके साथ अलग अलग तरह के चैलेंज. You know, पाकिस्तान के साथ, you know, this whole border dispute, I think been there, looks like we will be there forever. You know, things are changing in Kashmir for now. There are other countries where China is exerting very strong influence and trying to in some way surround India with, you know, very deep economic tie, lot of cheap debt and so on. Yeah, regional geopolitics, you know, is how does India need to navigate, how much our economic interest should be tied up, or are these countries too small for a meaningful economic, you know, collaboration? No, they're not too small at all. See, they're small compared to India. They're reasonably sized economies. And remember that economic integration always helps.
And I think one of the biggest disadvantages for India has been that we have very little trade in the SAARC area. Right, to Pakistan ko hata bhi dein. And see, one of the problems with India post-independence also was that our borders suddenly shut off. See, पहले आप वेस्ट एशिया से बर्मा तक एक ट्रेडिंग जोन था. अब सडनली उसको आपने बैरियर्स में डाल दिया. तो उससे क्या हुआ, यू थिंक अबाउट दिस वे, जैसे कलकत्ता का प्री एमिनेंस, ठीक है, मतलब वो कम्युनिस्ट सरकार ने वहाँ जो किया सो किया, बट 60 से ही रॉट शुरू हो गया था. बिकॉज सी द कितने बड़े बैंक उड़ गए क्योंकि उनके सब लाइबिलिटीज पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान चले गए थे. वो ट्रेड बैरियर्स हो गए वहाँ पे, तो बहुत बिजनेसेस बंद हो गए. So a lot of damage happened, and now that he's opening up, now it is, you can potentially, drive in theory from Guwahati to say Bangkok or Singapore even, is a remarkable change. And so as we build the highways, as we do the connections, let's say Sri Lanka has 40 gigawatts of wind power capacity. In that area where there are lots of strong winds. Connect the grid, right, and let them produce the wind power. It's good for them, good for us. We are already routing hydropower from Bhutan to Bangladesh. So this was just one small example, right? But so there's a lot more that can be done through economic integration. And I think definitely, I mean, even if it is not just to ward off China's influence. See, it is in China's interest to do that. हम भी जाके वियतनाम में ये कर रहे हैं. So, हम भी मतलब we can't, perhaps as economically powerful to throw money at it. But by offering training fighter jets and all of those, we are doing exactly the same. Right. So, तो वो तो करेंगे. So you should accept कि वो करेंगे. But there is a lot of value in this economic integration. Like, NAFTA is a huge advantage for the US. And the more economically integrated you are, the less likely that you will. It doesn't mean it will all be at war, right? But so मेरे हिसाब से the direction of travel is very good. So we are starting to see more collaboration, more highways, more interconnection with Bangladesh, with Bhutan. I think Sri Lanka also now. I think the interactions have intensified, and some of the. And so Myanmar is a classic. If you recede, then China starts becoming dominant. So you have to engage with them. Right. Even if you don't like the fact that they're not democratic, you have to engage with them. So and it's a very important part of if you want to build a highway, connecting straight to the east. So and this is where we have to remember that it's easier to get from Guwahati to Bangkok than to get from Guwahati to Bombay, right? And so as we think about ecosystems or supply chains, it's very important to think about कि भाई वहाँ से तो वही trade करना है. पहाड़ भी है वहाँ पे, ऐसा simple नहीं है, but you can trade there. So I think it's extremely important, and I can see that there is decent progress. तो मेरे को जैसा ओवरऑल समझ में आ रहा है नीलकंठ की अभी we've been talking about rise of India and GDP going to certain size and so on, but वो होगा interconnected global economy के context में, और जैसे size बड़ा होगा, and if you think about historically India was both a economic superpower in some ways, 25% of global GDP output by some estimate at least, but we are also quite interlinked. वो वास्को डी गामा इंडिया का पाथ इसलिए ढूंढ रहा था कि ट्रेड कर सके इंडिया से. सिल्क रूट में इंडिया वाज ए वेरी प्रोमिनेंट फिगर, वेरी प्रोमिनेंट इन दैट, राइट? तो उस वक्त भी हम इकोनॉमी बढ़ी थी, और पूरा उससे भी पहले ग्रीक एंड रोमन टाइम्स was there were things that have been found in recent वो कौन सा पोर्ट है वहाँ केरल में, मुझे so there have been there's been evidence found of Roman coins here, of Hindu gods being found somewhere in Egypt or Greece or someplace, right? So the trade links have been there for a very long time. Cambodia वगैरह में ancient Indian temples, right? So part of being an economic superpower means you have to engage with the world, which requires navigating complicated geopolitics. Yes. So all of us as Indians perhaps also need to pay more attention and take more interest in the affairs of the world,
because in some ways our jobs, our economy, our businesses are all going to be affected by it. Yes. But it is a very complex and fascinating topic, and I think, you just have an encyclopedic knowledge of what is happening in the world. I'm really glad you're able to find time and kind of very patiently walk us through at least in all the stuff that's relevant. Thank you. Yeah. Thank you for having Thank you, me. Neelkanth. Thank you. At Sparks, we aim to bring to you stories of exponential impact. We share in-depth analysis of what goes behind success stories. If you find our conversations interesting, you can join us by subscribing to our YouTube channel. You can also listen to Sparks on Spotify, Apple Podcast, or any other audio platform of your choice. If you have any suggestions on who we should invite or what topics we need to cover, just let us know in the comments. We are always listening, looking for ways to improve, and keep getting better as we go along.